Assalamu alaikum to students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11. Today I am going to discuss the shapes of bacteria. So let's move to the classboard. So dear students, shape of bacteria. An important long question. Shapes of bacteria. चलिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि इस चैप्टर में हम तकरीबन 4 से 5 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे बैक्टीरिया की, ठीक है। तो उनमें से ये एक है। तो ये जो भी हम पढ़ने लगे ये बेसिकली क्लासिफिकेशन ही है और ये बेस कर रही है किसके ऊपर? शेप के ऊपर। तो शेप की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फ्लैजिला की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, सेल वॉल की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एंड देन न्यूट्रिशन की बेस के ऊपर एंड रेस्पिरेशन। ये 5 डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें इस चैप्टर के अंदर। और ये क्लासिफिकेशन जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो शेप्स ऑफ बैक्टीरिया हमने बात की थी इन द प्रीवियस लेक्चर। मुख्तलिफ तरह के शेप्स डिस्कस हुई थी, लेकिन हमने बात की कि मेजर 3 शेप्स हैं, ठीक है। सो बैक्टीरिया in bacteria there are 3 major shapes। जी डियर स्टूडेंट्स, वो 3 मेजर शेप्स कौन सी थी? प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था मैंने। सो 3 शेप्स, द स्फेरिकल आर द कोकाई, रॉड शेप्ड द बैसिलस एंड द स्पाइरल शेप्ड, ठीक है। तो हमने इन 3 शेप्स के हवाले से बात की थी, तो उनको हम डिस्कस करेंगे टर्न बाय टर्न। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, इनको इनेमोरेट कर लें पहले, फिर उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं ताकि वो ज़हन में एक स्केच बना रहे। कोकाई, नंबर 2 the bacilli, and number 3 spiral shaped और curved। क्लियर? तो इसको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोकाई, इसको कोक्साई भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको कोक्साई भी बोलते हैं क्योंकि डबल सी इसमें आ रहा है, तो लेकिन इसको कोकाई भी आप पढ़ सकते हैं। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोकाई, So as far as कोकाई arrangement is concerned, ये basically जो arrangements हैं ये on the behalf of planes of cell division, ठीक है। एक तो इनकी shape और दूसरा फिर उनकी further जब हम classification पढ़ेंगे, that will be based upon the arrangement of the arrangement will be upon the planes of division. So as far as कोकाई are concerned, these bacteria are spherical समझ बिल्कुल राउंड और ओवल, या फिर ओवल भी हो सकते हैं, ठीक है, उसी से मिलते जुलते शक्ल, ठीक है, स्फेरिकल और ओवल, एंड हैव and have many other distinct arrangements which are based upon तो इसको नोट कीजिएगा, विच आर बेस्ड अपॉन प्लेन्स ऑफ डिवीजन, प्लेन्स ऑफ डिवीजन। तो डिस्टेंस आपने मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में प्लेन्स पढ़े हुए हैं, प्लेन्स, ठीक है, एक्स वाई जी, ये 3 ही प्लेन्स होते हैं मैक्सिमम। तो जिस प्लेन के ऊपर वो डिवाइड करेंगे बैक्टीरिया,
उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे और जिस तरह से वो ग्रुप अप होंगे, कॉलोनाइज करेंगे, इस वो डिफरेंट अरेंजमेंट्स बना लेंगे और उन अरेंजमेंट्स को हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं। अभी इसके बाद इसकी वो सब क्लासिफिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। सो कोकाई, इसकी शेप को देख लें पहले। यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इसकी शेप। सो लाइक दिस दे आर, दिस इज कोकाई, ठीक है। इस तरह से spherical in shape. That's it. So that is the shape. Now, the cocci are further divided into coccus, that is singular. If there is a single cell, if there is a single spherical cell, it is called coccus. Clear? सिंपल एक हो, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पर इसके अंदर यहाँ है लाइक दिस, ये इसकी शेप आ गया, ठीक है। देन देयर इज डिप्लोकोकस। और डिप्लोकोकाई भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है, डिप्लोकोकाई। So diplo or di means two. If the arrangement occurs in, if the arrangement occurs in the form of pairs, in the form of pair, ठीक है, so that very arrangement is called as diplococci, ठीक है। तो ये पेयर बन जाएगा 1 and 2 diplococcus, ठीक है। So this is a diplococcus or diplococci. The third categorization is streptococci. तो दूसरा स्ट्रेप्ट का मतलब होता है चेन। स्ट्रेप्ट मीन्स चेन। इफ द अरेंजमेंट occurs in chain, it is called, it is streptococcus और streptococci। अब ये चेन किस तरह से होगी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6, so like this, so this is a strapped, this is a chain, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बात की थी कि जो उनसे ये हम अरेंजमेंट बता रहे हैं, प्लेन्स ऑफ डिवीजन की बात करें, तो यहाँ पर भी प्लेन ऑफ डिवीजन की बात करेंगे। सो डिप्लोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई, इनके अंदर जो प्लेन ऑफ डिवीजन है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 1। यहाँ पर द प्लेन ऑफ डिवीजन इज 1 और सिंगल, यानी कि इसी एक्सेस के ऊपर लाइक दिस, तो दैट इज 1। तो ये एक सिंपल सेल था, ये देखिएगा जरा गौर से। सो दिस वाज अ सिंगल सेल। अब यहाँ पर एक प्लेन पे डिवीजन हुई, सो इट बिकेम नाउ इनटू 2, ठीक है। इसी तरह से फिर इनके अंदर होगी, तो ये फिर इस तरह से इधर भी और इधर भी। सो एक ही प्लेन के ऊपर डिवीजन हो रही है, सो दिस इज नॉन एज in diplococci as well as streptococci. So this is the plane of division in single plane. Next is the tetrad.
टेट्राड। तो टेट्रा किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? 4 को कहते हैं, ठीक है। इफ द अरेंजमेंट occurs in the form of 4 cocci, कितने? 4 cocci, and the plane of division is, plane of division यहाँ पर मैं बताऊंगा। So it is like this, 1 2 3 and 4, simplest। तो यहाँ पर ये इस प्लेन पे भी डिवाइड कर सकते हैं और इस प्लेन पे भी, ठीक है। 1 and 2, वहाँ पर सिर्फ सिंपल एक था, सिंपल 1, या इस प्लेन पे या फिर इस प्लेन के ऊपर हो सकते हैं। यहाँ पर 2 प्लेन्स पे डिवीजन होती है। तो अब जो अरेंज होंगे ये एक दूसरे के साथ, वो पेयर अप होंगे। सो इस तरह से 4 की इस तरह से शेप में अरेंज होंगे। सो दिस इज नोन एज टेट्राड। सो प्लेन ऑफ डिवीजन इज, plane of division, so plane of divisions are in tetrad 2. Now another one is there, that is staphylococcus and sarcina, 2 more remaining. So first of all sarcina, और सार्कीना भी इसको प्रोनाउंस करते हैं कुछ लोग। सो इफ द अरेंजमेंट occurs in the form of 8 cocci, कितने? 8, forming a cube, forming a cube. So that is called as sarcina. So यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4, और इसी के पीछे मजीद 4 और पड़े हुए बॉल्स लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है। सो इट इज जस्ट लाइक के 4 बॉल सामने और 4 बॉल्स उसके बिल्कुल पीछे, तो इट बिकम्स 3 डायमेंशनल, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल। सो अलोंग दिस प्लेन एंड अलोंग दिस प्लेन एंड अलोंग दिस प्लेन, तो इस तरह से ये 3 प्लेन्स ऑफ डिवीजन इसके बनेंगे। सो द प्लेन्स ऑफ डिवीजन आर 3। Planes of divisions are 3. Clear? So that is known as sarcina. And finally, one more, that is staphylococcus. If the cocci are arranged in clusters or grape-like arrangement, this is termed as, it is called staphylococcus. Clear? स्टेफलोकोकस। और यहाँ पर जो प्लेन्स ऑफ डिवीजन है, पहले उसको डिस्कस कर लूँ, आर इर्रेगुलर। द प्लेन्स ऑफ डिवीजन मीन्स कि यहाँ पर इर्रेगुलर फैशन के अंदर जो कोकाई हैं वो डिवाइड होंगे, इसी वजह से वो एक बंच बनेगा ग्रिप लाइक, इर्रेगुलर। क्लियर? और इसमें किस तरह से शेप बनेगी, लुक एट दिस। सो लाइक दिस, इस तरह से।
like a bunch of grapes is there. ठीक है? So this is called a staphylococcus. Now, some examples related to this cocci. So two examples are given in our book. Number one is Diplococcus pneumonia. As it is a scientific name, we have to underline it. इसके हवाले से एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको बताता चलूँ. डिप्लोकोकस निमोनिया जो है इसको रीनेम किया गया है. इट हैज़ बिन रीनेम्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. Or it is responsible for pneumonia or blood poisoning. It is also known as न्यूमोकोकस. इसको न्यूमोकोकस भी कहा जाता है. इसका दूसरा नाम है न्यूमोकोकस. आप सेकेंड ईयर के अंदर इसके हवाले से एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे. एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ग्रिफिथ इन द डिस्कवरी ऑफ DNA, चैप्टर नंबर 20, उसमें न्यूमोकोकस का नाम आएगा. ठीक है? तो ये बेसिकली इस तरह से दे आर स्फेरिकल शेप्ड. और ये ब्लड पॉइजनिंग और निमोनिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. This one, and also the second example which is given, that is Staphylococcus aureus. ये भी काफ़ी खतरनाक किस्म का डेंजरस बैक्टीरिया है. ठीक है? It causes urinary tract infection. This UTIs जिनको कहा जाता है, और सिंपल वे से urinary tract infections. related to our urinary system, जिसकी infection cause कर सकता है. And sometimes it also leads to otitis media, that is the inflammation of middle ear. It is middle ear infection. Okay? So middle ear infection भी ये cause कर सकता है. सो आमतौर पर यूटीआईज यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के हवाले से ये फेमस है. और डिप्लोकोकस निमोनिया, ये आमतौर पर निमोनिया से ये नाम याद रखना है. अब ये पुराना नाम है इसका वैसे डिप्लोकोकस, और वैसे इसको रीनेम किया गया स्ट्रेप्टोकोकस. ये इसका सेकंड नेम न्यूमोकोकस भी इसको कहते हैं. डिप्लोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस को न्यूमोकोकस भी कहा जाता है. एंड इट कॉजेज निमोनिया एंड ब्लड पॉइजनिंग इन वेरियस एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स एज वेल. सो दिस इज द अरेंजमेंट रिगार्डिंग टू द spherical shaped bacteria. So dear students, hopefully आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और एक कंपैरिजन की फॉर्म में पूरे के पूरे शेप्स को हम डिस्कस करेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.